So, welcome to. We host of this club because situated in a sacred river गंगा और यहाँ एक जेटी भी बना हुआ है, उसमें जाके आप आनंद ले सकते हैं जो खाली मिलेगा। चलिए वो तो ठीक है, वेन्यू तो जैसा है अच्छा ही है। अब ये जो है तो हम लोग एक नई दुनिया में जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस, रूल्स, टेम्पोरल बोन पावर अनेक डिफिकल्ट, बहुत दिक्कत होता है। तो नॉलेज ब्रिज करके एक कंपनी है, वो सामने आई है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है 3D प्रिंटिंग ऑफ टेम्पोरल बोन्स। तो हम लोगों ने 18 सीटी स्कैन, 18 पेशेंट्स का सीटी स्कैन के पास भेजा था। उसमें से इन्होंने एक सूटेबल को सेलेक्ट किया और उसी बोन को इन्होंने प्रिंट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें तो ये हमारा आज का जो शेड्यूल है इस तरह से है कि हम लोग इसमें लाइट किस है नहीं है ये आपको आपको देते हैं ना करने के बाद एटिकोटोमी, मॉडिफाइड एटिकोटोमी, फेशियल नर्व डिकम्प्रेशन, एंडोलिम्फेटिक सैक approach. Bill silent is a small piece of bone. When we do transvalency approach for posterior fossa tumors, then a small piece of bone we used to save when we are sclerotizing this sigmoid sinus. Small piece of bone will live there. There is some role for that. Then translational approach of internal conflict makers. Okay, radical mastoidectomy. ये जो टेम्पोरल बोन है आपको जानते हैं कि जैसे 3D प्रिंटेड बोन, तो इसमें आपको सब चीज तो नहीं मिला है, सॉफ्ट टिश्यू विल नॉट गेट, बट व्हाट ऑल थिंग्स यू विल फाइंड, दैट इज ऑसिकुलर चेन यू विल फाइंड देयर, कॉर्डा टिम्बरी नर्व यू कैन फाइंड, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व विल बी देयर, फेशियल नर्व विल बी देयर, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर एक्वेडक्ट विल बी देयर, एक्विल पेटेंट, arcuate eminence. What is arcuate eminence? Anybody can tell? It is impression of superior semicircular canal seen in the middle cranial fossa. Then sigmoid sinus you can find patent cochlea, patent semicircular canal, and internal acoustic matters with nerve bundles. These things you can easily find in this bone. Then every dissector will be given all these things: 3D simulation temporal bones, microscope, suction machine, drill with handpiece. These things हमारा जो स्पॉन्सर है जाइडस, उन्होंने इसमें ह्यूजली इन्वेस्ट किया है, मतलब नॉट लाइक 1 लाख 2 लाख में, इसमें मोर देन 10-15 लाख का एक्सपेंसिव ओनली फॉर दिस एजुकेशन पर्पस ऑफ अपकमिंग ENT सर्जन्स. Bone is costly basically. Very costly. Bone is like 15,000-20,000 if you go to purchase it. Okay, and Zydus has come up with very big support. 2020 से कंटिन्यूअस टेम्पोरल बोन डिसेक्शन करा रहे हैं, मतलब मास्टर माइंड हमारा टेम्पोरल बोन का कलकत्ता में किसी को बोला जाएगा तो ही इज द पर्सन. ओके, देवाशीष गोयल सर हमारे रेल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, ही विल कम लेट. मोहन सर आने वाले थे, आए कि नहीं है, भैया आएंगे, वो बोले कि आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे. देन केके बोस हमारा फ्रेंड है, ठीक है, ही इज द क्या बोलेंगे BMW मर्सिडीज ऑफ ENT इन कोलकाता. कमलेंदु हल्लर सर हैं, वो आएंगे. उत्पल सर मेडिकल कॉलेज से आएंगे, NRS मेडिकल कॉलेज से आएंगे. रंजन चौधरी सर आएंगे, श्रेयसी बर्मन आएंगे, पुनेंदुदा ऐसे से इधर हैं. बिनादा इज HOD ऑफ हल्दिया मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी कम. एंड मनोज मुखर्जी सर आएंगे, आरामबाग से आएंगे, HOD ऑफ आरामबाग मेडिकल कॉलेज. तो ये सब आपके फैकल्टी में, कोई भी डाउट होगा किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है. जब टेम्पोरल कोर्स होगा उसका मॉड्यूल ये होगा कि डेमोन्स्ट्रेटर एक स्टेप करके दिखाएगा, वो बना हुआ है. Participants will be given valuable experience in identifying key anatomical landmarks and refining surgical approach under expert guidance. This is the bone you will be getting. The bone is same for all. इसे I think साइड आप लोग बताएंगे, ठीक है. सेम साइड है, एक ही बोन प्रिंट हुआ, एक ही डिजाइन है, सबके पास सेम बोन है, तो there will be uniformity. Okay, and at the end of course there will be prizes for first, second, third prize. The first winner will get one temporal bone free of course from the knowledge bridge.
and runner-ups will get certificates and memento, trophy. So small video है ये कि टेम्पोरल बोन में कैसा कैसा दिखता है. So this is, you can see, ये हमारा हो गया zygomatic arch हो गया, external aortic canal हो गया, spine of Henle हो गया, ये हो गया cribrosa, linea temporalis, mastoid tip, है ना. नर्व प्रोसेस प्रोवाइड कर दीजिए. एक नर्व यहाँ देख रहे हैं, ठीक है. ये है आपका स्टाइलोइड प्रोसेस, मास्टोइड टिप, इसको आप लोग जानते ही होंगे, है ना, जहाँ पर अटैचमेंट ऑफ डाइगेस्टिव पोस्टीरियर बेली होगा. तो दिस इज द फोरामेन फ्रॉम वेयर आवर मेन नर्व इज कमिंग आउट. मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग अपना पहचान लें, ठीक है. थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ. So this is internal acoustic meatus, है ना. यहाँ पर इस बल्ब को अभी ने मैंने नाम बताया था, आप लोग फिर से याद कर लीजिए. जहाँ पर सुपीरियर सेमिसर्कल कैनाल का प्रोमिनेंस है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सिग्मोइड, है ना. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स में है. ये सिलिकॉन का बना हुआ है, अंदर में राउंड विंडो भी मिलेगा, वो सिलिकॉन का होगा, ठीक है. काइंड ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन, यू कैन फील इट. ओके. So this way we have to learn. We have to in future I think they will provide more refinement in this bone. अभी ये स्टार्ट हुआ है. It's a very good concept, very good initiative. So knowledge bridge के लिए हम लोग appreciation के लिए ताली बजाएंगे. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है. And for Jairus also. Anything आपको जरूरत पड़ेगा, कहीं भी कुछ चाहिए, उनको एक कॉल कीजिए, अच्छा हो जाएगा. He is Mr. Nikhil Guha. He is a OSD to our general manager. He is CAB planning, and he is a very sports enthusiastic. Our SEXA's general secretary. मैं भी sports person हूँ. मैं joint secretary हूँ. He is our secretary, and he is my best friend in this college. He has come to see. तो ये bone हो गया. Next slide कर लो. So these are steps we are going to do. Then we have to delineate the sigmoid sinus, dural plate, lateral semicircular canals. These are major landmarks in the cortical mastectomy. Then thinning of posterior canal wall, digastric ridge. This is another important landmark. This digastric ridge. Then we will do the posterior tenotomy and cochleostomy. So this part will be done up to this digastric ridge. This will be done by the demonstrator. Then you have to repeat it. One by one. This one cable, two dissector will do it. Okay. Then posterior tympanotomy. Nowadays days of cochlear implantation, so everybody should know. It's not very big surgery. Only thing is that you have to be little careful, and you have to do again and again this dissection, temporal dissection. See the video, see the live surgery, and practice in a temporal bone, and start doing it. It's not a big surgery. I consider it as easier than step surgery. In step we do surgery live here. And so this cochlear implantation is dead here, so nothing to worry. Okay, we have to preserve the patient. This will be separate part. This part will be combined together. Facial nerve decompression, that is another step. Then delineation of bony labyrinth and all these semicircular canals will be exposed. Then endolymphatic sac procedure will do. Then there will be working lunch. Then we'll open the bony labyrinth, demonstration of aortic cycle, then middle ear anatomy demonstration, cochlear thriller. This part we'll do. If time purpose you can do further, but this temporal one has been designed for this much only. Because there will be no soft tissue, so this much they have provided. Okay, so I think this is more than enough for beginners for this temporal bone dissection, otology. Then there will be question answer session, and validity will be done. मैंने 5 से 36 लिखा है. Maybe it is 5:30 ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, और आप लोगों सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. one from the our side, and observer जो आएंगे उनको भी दिया जाएगा. And another certificate you will receive from the knowledge bridge. That will be posted to. This bone will be given. It's very costly. Okay, so you can practice it, keep it, whatever. So this will be the first prize along with certificates and trophies. Okay, so let's begin. Okay. So this is the case.
A 20-year-old male patient presented with recurrent mucopurulent discharge from right ear. Discharge are insidious in onset, intermittent, profuse, mucopurulent, false smelling, and non-blood tinge. It was associated with recurrent earache. No known comorbidities. Yes. So this is the endoscopic picture. You can see the perforation is around moderate to रहेगा. ये picture almost match कर रहा है. ठीक है. This is the vertical segment. ठीक है. और ये देखिए कॉक्लिया दिख रहा है, ऑसिकल्स दिखेगा. माने मोटा मोटी लगेगा कि हम ओरिजिनल ही कर रहे हैं. ठीक है. So that's why we have did this CT scan only yesterday and we kept here to give an insight what it is looking like. Okay. Next. खत्म हो गया. ठीक है. सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया? मेरा एक्सपीरियंस है it was basically nearly normal. But that bone was little bigger size. Around 40-50% size was even bigger. So थोड़ा सा फीलिंग हो रहा था कि थोड़ा अलग है. बट ये बोन लग रहा है कि लगभग नॉर्मल साइज है. देखते हैं कैसा रहता है. ठीक है. First thing is the dissected. Who has already done the proper dissection earlier? Please raise your hand. Or assisted in the surgery or done in surgery. So most of them newcomers. Most of the newcomers. Yeah. It is a fantastic program that we have started. But the problem is, they should start from the beginning. We are 3 or 4 years already here, or 5. So we will reach everyone and just guide him how to start and how to do it. Accordingly basically যেরকম শিডিউল করা আছে ওরা ভাবে করতে বলা হবে. ওইভাবে করতে বলা হবে. পার্ট কুইকলি দেখিয়ে দেবে. ওই ডেমোটা না, ডেমো করে যদি করো প্রচুর টাইম লাগে. ডেমো করতে গেলে 1 ঘন্টা লেগে যাবে. প্রথমে টাইমে তুমি এ করতে পারবে না. हम कह रहे हैं कि जो एडवांस पार्ट है, पहले जो बेसिक पार्ट है उसको करके दिखा देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कमर्स. सो आई थिंक बेसिक पार्ट थोड़ा सा करके दिखाने से अच्छा रहेगा. देखते हैं अगर लगेगा बहुत टाइम लग रहा है देन आपके हिसाब से स्विच ऑन कर देंगे. उसको एडिट करके हॉटस्पॉट कर. ओ ऑलरेडी आपका ये है माने ऑलरेडी वीडियो नहीं वो डायरेक्ट वीडियो नहीं किया. तो तब तो करके दिखाना. हाँ. तब तो टाइम लगे যাবে সেটা বলছে. एक्चुअली हमने तो मिला नहीं. अब करेंगे तो कर लीजिए ना. बेसिक पार्ट अगले हम स्टार्ट कर लीजिए. Be toxic to our system, we don't know. So be very careful to wear a tight mask. ना ऑल टाइम वाटर देबो. शायरी वाटर মানে উঠবে না বেশি. 2 मिनट आप कुछ बता दो इसके विषय में कैसे ये बनता है, क्या है, इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा बता दो. हाँ, Since Shaili from knowledge base and civil guide you through the bones. because you have such concern, no? Because the dust you generate to have injured. Yeah. No, actually, this bone is developed from various kind of a polymer. Kitchen counter and also drilling. It is that safe. And it will have all the elements what is there in an actual temporal bone. So it is quite safe. Thank you. Yeah, please subscribe. You focus on the external auditory canal. Receptors landmarks before any surgery. There is nothing new for our surgery except for every surgery. Every surgical branch we have to rely on landmarks. So this otology starts with, it is not that prominent in this bone. Sometimes से पीछे you may visibility get नहीं हो रहा very है बोल रहे prominent हैं. one, तो sometimes थोड़ा you may सा get linea temporalis. So linea temporalis is a line which roughly defines the dural labor. Superior temporal line is this is also called superior inferior, that is confusion. So linear temporal is a more safer word. So this line, it is prominent up to this place. After that, it is getting faded away.
So just 1 or 2 millimeter or 3 millimeter above, we'll find the dural plate. Okay, tegmen. Tegmen is divided into two parts. One is tegmen enteric, other is tegmen tympani. Tegmen tympani is a part of the dura, which like sir बने गुआ सर हमारे बीच में आए हैं हमारे साथ में डॉक्टर अरिंदो बेरा हमारे कॉलीग है पीडियाट्रिशियन है अगुआ सर ईएनटी सर्जन है और साथ में हमारा रेलवे एमडी है मेडिकल डायरेक्टर बीआर सिंह हॉस्पिटल first line, then we have to make a triangle, and the third line will be a tangential line towards mastoid process, like this. So this area is our a triangle of attack. This area is our triangle of attack. We have to drill this bone out, somewhere this area we may find the sigmoid sinus. So sigmoid sinus is behind. Dural plate is in the superior part. Then this digestive piece we will find in the mastoid deep region. Posterior canal wall we have to thin out. And once we open the mastoid antrum, we will find the lateral semicircular canal. So these are landmarks we have to start with. Please mark the landmarks and show it to the judges and our colleagues. And 1 to 1.5 centimeter medial to it, we find the mastoid antrum. This is fixed structure, it doesn't say anything about that. This is the line. Okay. और उसी के अंदर अगर सुधार कराओ तो मिल जाएगा No, this is wrong. Okay, ठीक है, सही है. This is your spine. Spine. यहाँ पर जो डिप्रेशन दिख रहा है, must liver fossa, and this is diabetic process. ये जो बल्ब है, इसको फॉलो करो पोस्टीरियर में. ठीक है? यहाँ से, हाँ, इसको ऐसे भी हाँ, ये है हमारा स्पाइन है. ये जो फोसा है, इसके अंदर तो यहाँ पर मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर रेडियस विल फाइंड. यहाँ पर इसके अंदर 1.5 बिल्कुल पता नहीं
more cavity. This much big. Okay. अगर किसी को डाउट है तो इधर आप स्कूल को देख लीजिए. माइक्रोस्कोप में उतना अच्छा पिक्चर मैं नहीं दे पा रहा हूँ. Anybody want to see how much big? Because the bone is same for everybody. Please come and see how big cavity you have made. अभी तक लोग एंटर नहीं होते हैं. बताओ मुझे क्या करना है. वो यूनिट चालू करना है. Yes. Now you can see. So this is the opening of mastodontum. Okay. So there will be a septum-like structure, coronal septum. After going through that area, you will find the mastodontum. Location is fixed. It is not going to change. It is just medial to the cranial fossa, 1.5 centimeter medial. So there will be a cell coming behind. You don't consider that as antrum. Antrum is the fixed area medial to the cranial fossa. नहीं, गंगाधर जी बोला ना, वही है ना. Antrum कभी इधर नहीं जाता, वही होता है, वही रहेगा. 12 millimeter. 12 to 15 millimeter. और इसमें कोरोनल सेप्टम स्पेशल है, तो मास्टर मिलेगा, वहीं पे वेट करता है. मिलेगा, आपको अंदर मिलेगा.
sigmoid sinus. Okay. Dura, sinus, sinodural angle. Okay. What is this pinkish area? This is another dura of posterior cranial fossa. Okay. This line is digastric ridge. इसका जो इंटीरियर लिम्ब है roughly corresponds to the direction of facial nerve. Anterior limb of the digastric ridge roughly corresponds to facial nerve. This bone open हो गया, तो not open. ठीक है? Okay? हाँ. This area is 18 going to adductor. So if we drill a little more bone here, we will see the thought process of incus. That thought process of incus will direct us for the posterior temporal anatomy in this area. This area we have to drill to enter into the middle ear through the mastoid mastoid cavity. Okay. What is Troutman's triangle? What is Troutman? Anybody can define? Troutman's triangle. Anybody know? Yeah? Endolymphatic tract diameter. That is different. That is not Troutman's triangle is the area for approach of middle cranial fossa, posterior cranial fossa. It is bounded anteriorly by the this labyrinthine block, superiorly by superior petrosal sinus, and posteriorly by the sigmoid sinus. Sigmoid sinus आपको दिख रहा है? ये ड्यूरा दिख रहा है? इसको और थोड़ा हम लोग medially drill करेंगे, तो another blue line will appear from this diagonal. ऐसे करके एक line आएगा. ये sigmoid sinus है. ये जाके वहाँ पर उसमें मिल जाता है. So that is the superior petrosal sinus. Superior petrosal sinus है. इधर sigmoid sinus है. ये यहाँ पर labyrinthine block मिलेगा और डीप जाना पड़ेगा. हम लोग Troutman's triangle. जब इस bone को निकाल देंगे, acoustic neuroma का सर्जरी यहाँ से होता है. Cerebellar abscess का ड्रेनेज यहाँ से होता है. ठीक है? So this area. Then donasal line अभी बाद में आएगा. जब हम लोग सेमिसर्कल कनाल वगैरह एक्सप्लोर करेंगे उसमें देखेगा. यहाँ पर इस जगह पर आता है सेमिसर्कल कनाल लेटरल. उसमें एक इस तरह से डायरेक्शन का होगा. उसमें परपेंडिकुलर एक लाइन है बाइसेक्टिंग है. इस लाइन में लगा डोनाल्सन लाइन और यहाँ पर पोस्टेरियर सर्विकल कनाल मिलेगा. इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगा एंडोलिम्फैटिक ट्रैक्ट. ठीक है? This area is facial digestive ridge. Okay. और यहाँ पर है lateral semicircular canal. यहाँ दिखना चाहिए लाइफ सिचुएशन में. इसमें बाहर से तो मार्किंग है, साइड एजेस नहीं दिखेगा, उतना प्रोमिनेंट नहीं है. तो वो होगा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और डीप. ये हो गया. जो सिस्टम क्या किया, जो नहीं किया, इसका कंप्लीट नहीं हुआ, बात लेते हैं. हाँ, सबसे दोनों अलग नहीं होगा. कैसे करना चाहिए? और yes, you are right. You are right. I gave the CT scan.
और कौन सा Everybody is ready to talk. We are here to help you. इनका फिर नहीं दिखा ड्रिल कर लो, इधर ड्रिल होगा तो यहाँ पर अभी आएगा सिग्मा साइन, यहाँ सिग्मा साइन यहाँ पर ठीक है। और इसको भी जाता हूँ और इसको थोड़ा 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 करके मेडियल टू लैटरल ड्रिल करोगे तो फिर यहाँ पर इनका साइन हाँ ठीक है। वो जो 10 बना या तुम्हारा 10 गया होगा या फिर अंदर से ही प्रिंटेड में होगा, बट दैट इज नॉट इनका सभी है नहीं। टच करके बाहर आओ, टच करके बाहर आओ, तो धीरे धीरे तुम डायरेक्टर्स की तरफ घुसो ठीक है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रिल दिस फोन आल्सो, ये फोन को भी ऐसे ड्रिल करके जा सकती है ना। यू कैन ड्रिल अप टू रूट ऑफ जाइगोमा एंड यू कैन एक्सपोज एटिक तो इसलिए थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लेटर बोला वेरी गुड ইনকাসের মতো কি বেরিয়ে আছে বলে এটা কি জুড়ে দেবো? হ্যাঁ সেলটা খুলে দেবো। बेसिक तो करना ही पड़ेगा। हाँ बेसिक तो करो आ रहा है ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़िया से डिफाइन कीजिए। इसके बाद দেখতে এখন কোনো কাজ করবে না, এইবার তুমি এখন এইখানে সরকারের ডিজাইনটা করো, টিপের দিকে যাও ঠিক আছে। হ্যাঁ एनीवे क्लोज टू द सेकंड आई विल विद दिस ठीक है। साइनो डबल एंगल दिख रहा है, इधर लेफ्ट सेमी सर्कल कनाल दिख रहा है, हिल किया हुआ है, यहाँ पर इंटरव्यू हो गया, इधर बीच हुआ है, दोनों साइड सब रहेगा ठीक है। उतना फोन यूज करने से ये प्रॉपर क्वालिटी बात ये स्टेप आप करोगे तभी ये मैंने हाँ हाँ पॉसिबल नहीं इतना आप जो किया ना अभी बहुत वाइडन और एकदम पूरा डबल। अच्छा दिस इज द सिग्मा चैनल, दिस इज द प्री सिग्मा ड्यूरा दिस इज द प्री सिग्मा ड्यूरा इसको खोलते ही सारे पहले मिल जाएगा। हाँ দিস ইজ অ্যাক্টিভিটি এখানে যে তুমি সিটিএনও পাবে এখানে সেট করো, তারপর ওসিএরটা এদিকে ফলো করবে, যেখানে দেখবে ডিপ করছে কমন ক্রাস সেখান থেকে অ্যান্টিরিয়রলি যাবে টুয়ার্ডস দ্য অ্যান্টিরিয়র এন্ড অফ দ্য हॉरिजॉन्टल सेमसर्कुलर कैनाल। देखिए भाई हम देख लिए हाँ हाँ
हम लोग का अपना डिस्कशन था वही तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊँ। ठीक है, ये जो बल्ब है ना, बल्ब इसका मिलर वहाँ पर वो ब्लू है, तो यू हैव टू फाइंड द ब्लू, देन पिंक, हियर पिंक, ठीक है, एंड इधर का ब्लू, इधर का पिंक। अभी ये पार्ट और खुलेगा, ये जो बोन दिख रहा है ये खुलेगा, ठीक है। तुम्हारा अभी ये जो আরে ওটা ছোট উইকো জানার মধ্যে কিছু অংশ সেটা তো আগে দিল কলবালা এটা দেখো একদম অন টাইম অন্তত এখন জানি তো জেনে 10 দিন হ্যাঁ কিন্তু জায়গা তো সেই অনুযায়ী আপনি ये বেড়ে গেছে না স্পেস বেড়ে গেছে দুই বেড়ে গেছে अगर ये wait for you to हम करते ना प्रोसेस को हम लोग डील करते हैं ये तो इंटरेस्ट हो बाकी इसको आप इसको ध्यान रखोगे
ये पिंकिश What is the boundary? ঠিক আছে, গুড। ডাক্তার প্রিন্সিপাল জেনারেল বয়সটা কোথায়? ভেরি গুড। হ্যাঁ, আর কি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ? হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার আই এবল টু সি? ওই ঝামেলা নেই। এইখানে তোমার I want to show you, you can see the interest here, right? You can see the interest here. So delineate the interest of this code, and what I want you to concentrate on is how I am using the drill here. It is very important to use an appropriate size burr, and when you're doing it, the drilling should be from medial to lateral. You work away from the interest away. Okay, so that's how you do it. Okay, gentle stroke, very light stroke. Okay, see, what I want you to look at is I'm not doing this. Okay, never do that in areas of importance where there are important structures. So you just do right. I'm following the body of the interest through the short process and the percentages, okay? Can you see that? There's a bone here. We need to remove that to be able to delineate it properly. And here we are gently going towards the. The other thing is we need to thin out the posterior canal wall, right? So all this bone has to go. I think a slightly larger bird here. So you can see the incus is beautifully visible here, and we have to follow the short process. Okay? The anterior of the digestive bridge gives you the landmark for the facial nerve and the salulomuscular foramen, right? So, we will remove this bit of bone because this is where we do Work and hand, जैसे उन्होंने हाथ मूव कर रहे हैं, गिरा का भी डॉक्टर कर रहा है, जितना चाह रहे हैं उतना ही सही होगा. and it's always in one direction. You don't go back and forth. You don't go back and forth. Okay? This is what I've been trying to explain to all of you there. That you go in one direction. Okay? See, here we are actually trying to delineate, the landmarks for the facial nerve. So we won't go across the long axis of the facial nerve. We will go along the long axis. Okay? How this bone has to go for us to be able to do a proper posterior development.
see when you are drilling along, say either the sinus plate or the dural plate or the posterior canal wall, when you are thinning these areas, how do you know that you are coming close to the structures, these plates of bone? Not just by the color, also you hear the sound that the bird is making along these, in these areas. When the plate of bone becomes thin, then the sound that the bird emanates becomes more high pitched, more teeny, acquires a more teeny quality. Apart from the change in color, that is also that also should alert you that the sinus plate or the dural plate or even the posterior canal wall are becoming thin. Okay. In a 3D printed bone, I don't think we will be able to appreciate that quality, that sound quality. But then I'm just telling you for that's called the sentinel cell. सेंटिनल सेल इसमें दिखेगा कि मालूम नहीं बिकॉज़ प्रिंटेड बोन है बट एक सेल आता है मोस्ट ऑफ द केसेस आता है नॉट ऑलवेज not always there, but if it is there, it makes your life easier. दैट इज आल्सो कॉल्ड हेराल्ड सेल सेंटिनल सेल हेराल्ड सेल उसको ओपन करने से सीधा टर्मिनेट चैनल निकलेगा फिर उसका नीचे वाला पार्ट को बिल्ड आउट करके ओपन करते हैं Right? So you start close to the long purpose incus. Sometimes when the facial recess is narrow, then you remove the incus part also. But edge, the ingoing edge prevents the wire from coming out. Okay. School of thought. It is always better to use diamond burr. Okay. And you keep progressing slowly forward. And also remember, the facial recess, the part of the facial recess that you are opening. If you remember this picture from Shambo, outer canal wall coming like this, annulus, and then the facial recess, pyramid comes down, stapes superstructure, right? So the bone that you are opening is probably more in the sagittal plane. It's more in the sagittal plane. It's not strictly in the sagittal plane, but it's more, when we are operating, it's more horizontally placed here. Actually in a more anterior-posterior direction, right? Not strictly that, but more so. And the chorda tympani will be slightly anterior to the facial nerve, isn't it? That's where you are going to enter. Another thing, sometimes it is canal. So it is possible. I have had a situation where initially I entered this thing. How do you know? When we paint the ear, we fill the ear with betadine. Simple, right? So, and as you gain more experience, what you need to look at is difficult situations. Sometimes it can so happen that even with all of this, you are not able to identify the round properly. You are not able to see. It's a very difficult anatomy from the rotated cochlea. Sometimes you have to thin out the bony canal wall so much so that you can probably slightly push it forward. Professor Kirtane actually mentions about breaking the posterior canal wall and pushing it forward along with the posterior canal skin attached to it, and then reposing it later on. मतलब जो वर्क इन नेक्स्ट किया हमने बहुत किया पोस्ट भी बोलते हैं. Usually in our setup, I have seen my experience. We have to
do the drilling work much more than children. Children तो तुरंत आता है, तो फिर कौन होता है? इधर तो बहुत ज़्यादा ठीक होता है. Yeah, and because it's an healthy master, not easy, humanity is generally expensive, and that makes life easier for us. Yeah. And also, see, I want you to notice the direction of my drill. I'm not doing the structure that you see is the pyramid, the stapedius tendon, long course of interest, and also you see the promontory. Okay? Yes. See, you can see the promontory here, right? You adjust your microscope so that you can your line of view is more parallel to the posterior canal wall, right? And give me a pointer. And in the skin take वो जो स्टीलर था वो दे देखो. Can you I don't know if you can appreciate it on the microscope on the screen there, but can you see it's slightly darker here than here? Is that appreciable? Yes. That area is darker after drilling. See, there's some water there, and you can see this blackish, this darkish area. That is the ground mineral name. Okay, there. See, this is the cupula of the ground mineral area. Okay. Yes. It blocks the view of the ground mineral. So you have to remove this ledge of bone to be able to see the ground mineral area properly. And this bone is medial to the facial. Lead wire and the facial nerve, so that there's no direct contact. Okay. Possibly the ground membrane. Okay. So here, quite often we have to drill out the posterior superior bit of the, facial, the ground mineral, the posterior superior bone in there. See, it's a bit too tight here, right? See, I'm trying to drill that, it's a bit too tight. So this part of the bony canal wall, further, you're probably going to cause a breach in the bone, right? The direction. The short pressure, basal turn of trachea will go like this, and it turn like this, and just below the, just medial to the processus cochleariformis, that is where the middle turn will start. Drill, and you will reach the middle turn, and then you can insert the electrode there. Okay? That tells you. Can you see that blue dot here? Right? Okay. Now the other thing is, before I present any further, before I insert the electrode, and the long axis of this conical
cochlea is actually the tip, it's in a direction where the tip is in the anterior epididymis. The apical electrode is towards the anterior epididymis. So it's like this. So this, see, this is the hook region. Okay, we enter, the round window membrane is here, we enter, this becomes the basal turn like this, and then middle turn, apical turn, right? So this is the modulus, right? So the blue dot should be this way. Cochlear electrodes, they have a flange, okay, from the Cochlear company. That points towards the hypotympanic. So you have to know your electrode, okay? And usually जो नेक्स्ट हमारा होगा सेशन फिशर डिकम्प्रेशन एंड फर्दर दैट विल बी डन बाय Bhimka Chowdhury sir. See, look at this. You don't hold it across, so that is where your insertion will be best. So now, coming to the round window membrane, right? So you look at this. This is a demo electrode, so it's bent. Usually not. See, if you can appreciate the blue dot here, it's pointing superiorly. The blue dot here, it's pointing superiorly, right? And usually at this point of time, you want to be under lowest magnification. You don't want high magnification at this point of time. इससे कम नहीं होता है, मिनिमम होगा। No. हो रहा है। Yeah, no. So it's a practice electrode, it's a bit better than electrodes, okay? So, like I said, see, there's a flex electrode which is very wiggly. It's one of the thinnest, that's why it's wiggly. And you want to do a gentle, controlled insertion. You want your arms well rested, okay? And look at the direction in which I am going in, okay? So that, see, this minimum, I don't have support here, but that is generally the direction. Claudina? Sometimes you use a claw gently to just support this. You don't exert pressure, you just gently insert. Okay. If you feel any resistance, you stop, because the cochlea is really very delicate and you don't want to be injured, causing any intracochlear injury. Cochlear malformations. The reason I say it's lovely because it's got this stopcock like a thing. Okay, it's a conical thing, stopcock, so it will automatically, seal the cochlear stubble. So you go like this, insert, slow and steady, slow and steady. Wrist का support अच्छा नहीं मिल रहा है. that is important, no? Support. That's going Gone. Almost. gone. See, slowly put it in, no pressure, just gently in. There, you see? It's close to the cochlear stubble, right? Especially in case of gusher, no, this will help. Where you have cochlear malformations, especially IP1, IP2, IP1 and IP3. IP2 you don't have a cochlear, CSF gush, unless there is a connection between the internal acoustic meatus and the basal turn. But in IP1 and IP3, you should expect CSF gush because you don't have a modulus, right? And in those kind of situations, this form electrode is absolutely wonderful. You have peace of mind because it's conical. It will go into the hole and it will plug. So you have sealed that area. You won't have a CSF egress and ingress of infection either. Okay? I think we can proceed next with the sections.
So a big round of applause for Mohan da. He has done wonderful job here. And बाकी जितने भी डिस्ट्रक्टर है वो अगर कॉर्टिकल कर लिए हैं तो आप लोग पोस्टेड टेम्पोटोमी करिए. हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आप करना चाहते हैं. स्टार्ट करेंगे. हाँ अच्छा लग रहा फोटो. Extend your training interiorly, not anteriorly, not posteriorly. Just interiorly, interior landmark. So that is the start of training. बाहर में राउंड टेबल है. कैसे करेंगे अभी वीडियो शूटिंग करने बड़े लंबा मैक्सिमम इलेक्ट्रोड 24 और एटिक में तो तुमने इधर से एटिक खोला है. अगर तुम इस पार्ट को और थोड़ा ड्रिल करोगे, वन प्रोसीजर कुछ लोग करते हैं. अगर एटिक इधर से जाना है तो उधर नहीं ना इधर खोला तो एटिक खोल दिया. वो एक प्रोसेस है, तुम गलती है लेकिन ठीक है. लेकिन तुमको शॉर्ट प्रोसेस अभी भी नहीं दिख रहा. All the dissectors, please. Making the wider accurate posterior tympanic keeping and
Devinas. So we will start drilling from the north of Devinas. The most important thing is to control of the field and not touching the auricular chain, because where the auricular chain is intact. One advantage of that we can follow the disease from the adventitia. The head of the Nelia is coming into the view. It should be up to the floor of the external canal. ये मॉड्यूलर सीधा जाएगा, थोड़ा सा ऑब्लिक अगर ज़्यादा रहेगा इंफीरियर टू सुपीरियर तो सीधा मॉड्यूलर पे करेगा। इसलिए डालने से स्टार्टिंग पार्ट में कोशिश करना कैसे जाए। एक बार ये चैनल पकड़ जैसे ये मॉड्यूलर यहाँ पर राउंड विंडो होता है, ये राउंड विंडो है। राउंड विंडो में quarter temporary now rotates. It is going exiting from here. Now when we do taking down the posterior canal wall. Now this is the situation where a canal wall down cavity is already created, and we can identify the facial nerve starting from here. This is the supposedly so this marks the first genu of the facial nerve as it comes from the labyrinthine segment, and the first genu is here under this. This prominence is the processor. Make a blue lining of the facial like an eggshell and then break it. Can you see? This is part of the bone. So the
operating tract will be lying below the ground surface. In this particular specimen, I do not know whether we can find the endolymphatic. And the first course that I enrolled in UK for a temporal bone dissection, I was not having any idea that this kind of material is available. I was always used to the temporal bone or wet temporal bone or catheter. So I went to the course and I saw this kind of a, this is 1998, and I saw this kind of a body and I said, what is this? This is not bone. So they said this is how the courses are done because cadavers are not available. So And you can support me for the bones. Thank you. Arrangement and this fantastic workshop on temporal bone dissection by Dr. Kailash Verma. He is very energetic. Experience. So we have all learned, and definitely the knowledge and the knowledge group हमारा सपोर्ट किया. Then प्रफुल्ल चतुर्वेदी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. हर तरीके से मुझे सपोर्ट मिला. और अभी 6 बजे से 7 बजे. हाँ मैम, जय मैम, जय. थोड़ा वीडियो ले रहे हैं. ये सबसे बेस्ट मॉडल है ये. Honored guests and participants who gathered here for the 3D simulation temporal bone. Good evening everyone. We are deeply. Past President AOI West Bengal, Dr. Amitabh Roy Chaudhary sir. Thank you. I invite Dr. J.P. Verma sir to kindly facilitate. Sir. Thank you, sir. Can we proceed for the ceremonial lighting of the lamp? हाँ ले रहे पहले जला लीजिए थोड़ा सा. लॉजिस्टिक लगती है, लेकिन फाइनली सब कुछ टाइम पे अच्छे से अरेंज हो गया. प्रोग्राम अच्छा हुआ है. इसके लिए मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ. और ये एक लर्निंग कोर्स होता है. हम लोग भी इस स्टेज से पास किए हैं. हम लोगों को वही सिखाने वाले लोग थे और हम चाहते हैं कि नॉलेज जो है नेक्स्ट जनरेशन को जाए. अभी ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे हमें ये Members of the scientific partners of this session. I don't want to prolong the session because I know that many people are in a hurry because they come from. I just came at around 9:30 to see this. What is how is the arrangement like and all, and they have been doing it from this morning. And we are in the anxious mode to run away. I feel that they want to finish this. I am thankful to him for organizing such a beautiful workshop. Thank you. To come present here in this new workshop. We are organizing a temporal bone workshop for last. The important getting from the administrator. I think skill development, as has been highlighted, is the foundation development workshop are very necessary, and I'm sure South Eastern Railway, BNR Hospital, and I have seen this department actually grow from its infancy into a very mature department, from a learning phase to a teaching phase. So I think there is actually not much of a difference between learning and teaching. It is a continuous process. As we teach, so we learn. Technology has advanced, as you can see. Not all the young ENT surgeons who joined this workshop today. It's my proud privilege on the behalf of South Eastern Railway to welcome you to this hospital, which under the leadership of the medical director and Dr. Verma have provided you this platform today to gain this knowledge on a simulated temporal bone. As past speakers have already mentioned that today you see the era of learning on patients